Good morning, everyone. Today, again, I'm starting list concept, and in the list, I will teach you more. Have I started the list or not? Please confirm any of you. Kevin, unmute yourself. Unmute yourself. Yes, yes, sir. You are teaching list. The list I'm teaching now. So today I will go further ahead in list, and that's very important topic. Meantime, I will clean the board. Okay. So I have taught that list is a mutable data type, and in this uh, we can change the value at its place. Okay, so some more concept I will teach you today in list. So for that I will share a screen for you, and I'm sharing a screen. Okay, the screen is shared, and I'll start Python now. Wait, Python. So Python is started here, new, and I have started with the initialization of a string or declaring of a string, that is 3, 4, 7, 88 to 99, any values. Sorry, this comma is not coming, that M was coming. Any value you give. So what is a list? This is a collection of data type, and it's a mutable data type. We can change value at its place. This is a very simple definition. When we print, I have already explained, those who have not joined, please learn that. Print A, so it will display the complete list, that is 322. List values are given in square bracket. When we initialize the values of the list, we give in square bracket. Okay, so run it. As you run it here, you get the result 32233. Any name you give hardly makes any difference. Okay, so 32233 and 6677, it is coming in a square bracket. That means it is a list. Each values are separated by comma sign, comma operator, or you can say comma symbol. Okay, so if you want to print a single value, so you can write here print a of 0. That way you can write. Okay, and then you run it. You get the result here as 3. That means when we give 0, I have already explained that a list has a collection of data item, and each data item has an index number, and it is a the data items are stored in a sequence, that is the index numbers starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on to n, whatever the numbers are there. Slowly, gradually, I will teach you more concepts. First, you learn the basic concept. You face problem always in the basic concept, then you are not able to make programs. List mein we are going to make lot of programs. Okay, and it's very important concept. Remember that 322, 33, 66, 7. But when we are printing a of 0, that means a 0 index number. This is the value of 0 index. This is the index of. One more example I will take here. If I write it here as print A2, it will print the index number of 2, that is 0, 1, 2. Always it starts index, always starts with 0. Remember that. So pehli value 0 index mein, second is on 1, and then 2. So A2 33 result will come. See here. So 3 of A0 and 33 is the value of A2. Hopefully this point is clear. Please show thumbs up so that I'll go ahead. Please. आप सब मेरे साथ जुड़े तो मुझे अच्छा लगेगा. Nishal was there already. Those who were not there, please show thumbs up so that I will go ahead, please. Okay. Good. Noel, okay. Shabash. Good. So I'm teaching you some more concept today. Okay. So this is the way. Now, before I'll go for the function, I will take out the book and I will go as per CBSE syllabus. So I will open the book, not for the programming, rather for the part of the syllabus and definition.
Now we'll go as per syllabus list. String chapter is given before the list, but I have already started list, so I will teach you list first, and then I will teach you string. So list manipulation. So here a list is a standard data type definition I have given you. There are different ways of defining a list. Now one by one I'll start. Now when you write here a is equals to square bracket, it is considered as empty list. Remember that. When you write suppose A, B, C, any name you can give is equals to square bracket 3, 4, sorry, I am writing comma here, is equals to square bracket 3, 4, 5. So this is the list of integer. List of integers. Getting my point? When we give suppose C is equals to square bracket 3.5, 6.8, 0.68, whatever you give, this is known as list of floats, floating point number. Got my point? Okay, next point is your, if we give, you can use A, no problem, something, Kota, Rajasthan. So this is a list of string. List of string. When we give A is equals to 4, Kota, Sir, 5.67, and now see this is the list of mixed type. List of mixed values. List of mixed values. List of mixed values. Okay. Please show your concern so that I will come to know that you are getting my point. Please show thumbs up so that I'll come to know that you are getting the point. Initial is okay, Parth, okay, shabash. Now see here, the results are coming here. Empty list, list of integers, list of floats, and list of string. Okay. Now, if you print here, suppose A, the last value of A will come here. So print A and run. So 4 Kota, sir, 5.6, that result will come here. So I will execute and show it to you the result. Here it is, all comments are not here. So what I will write here, comment, hash. Here also I write hash, so that in execution it will not show any error. Hash, and see the color is changing, that means it is a comment. Hash. Now I'll execute, see the result. The result is coming 4 Kota, sir, 5.6, which I was telling you. Okay. So show thumbs up that you have understood. All of you, please. Noel, you are having problem, Kevin. Okay. Parth. Please all. I will explain you again if you have any problem. Parth, you have problem? Otherwise, show thumbs up. Okay. Parth, you have problem. That means, see, this is an empty list. This is list of integers, list of floats, this is list of strings, and list of mixed type. Okay. Parth, you are not showing still thumbs up. That means you have problem or you are not there. No one else has problem now? Nishal, do you have any problem? Kevin, do you have any problem in this? No, Parth is showing up. I think Parth was out for some time. Okay, good. So now, next point I am going to write it here as, देखो एक empty list का one more तरीका आपको बता दूं. One is, this is empty list. So one more way of defining empty list is, you can write this way also. A is equals to, मजेदार है ये. Suppose A, B, C, D, X, L, कुछ भी लिख दो. L is equals to, and then you write list.
in small, and then you write round bracket. That is also a way to define empty list. यहाँ पे आप list कीवर्ड यूज करेंगे round bracket. Actually ये concept कहलाता है constructor concept, but it is not a part of your syllabus, so I will not teach you. Constructor is, थोड़ा सा बता देता हूँ, constructor is the same name of the class and used to initialize an object. मगर आपको ये सिलेबस में है नहीं तो मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, बस आप एक तरीका समझ लो कि इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं. तो one way is defining empty string is like this, another is defining an empty string by writing list and round bracket. So simple. Nishal, do you have any problem in this? Two ways of defining an empty list. One is a is equals, normally we will use a is equals to square bracket, but there is one more way, that is L is equals to list. आपको मैं प्रिंट करके दिखा दूं तो आपको विश्वास हो जाएगा. Print L, and when I will run this program, you will not get any result for L. Empty will come. दिख रहा है बेटा? So even I have used L is equals to list and round bracket, the result is coming square bracket. Even for this, you will get only square bracket. That is empty. No values there. मेरे को इसमें ज्यादा और मत पढ़वाओ, कोई मतलब नहीं है इसमें. Nishal, understood? Please show thumbs up any of you so that I will come to next topic. बहुत ज्यादा हो गया ये. Understood? Very good. Shabash all of you. Good, 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 good. Next is your, एक और कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ है, लॉन्ग लिस्ट. कुछ भी नहीं है, लॉन्ग लिस्ट आप बुक से देख लेना, अगर है नहीं तो बहुत सारे एलिमेंट्स अगर हो तो वो कहलाएगा लॉन्ग लिस्ट. सिंपल से लिख लो, a list has number of elements is considered as a long list. जो मुझे पढ़ाना है वो मैं अच्छी तरह पढ़ा दूंगा. लॉन्ग लिस्ट की डेफिनेशन लिख ली, a list having number of elements. मान लो कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया, इसी को ले लेते हैं, और मैंने बहुत सारे एलिमेंट कर दिए, तो ये आपका लॉन्ग लिस्ट हो जाएगा. इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको? ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? लॉन्ग लिस्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज योर नेस्टेड लिस्ट. ये लिखो आप, इसको मुझे पढ़ाना है. नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट नेस्टेड लिस्ट कहलाती है. ठीक है, लिस्ट इन अ लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट. अब कैसे मतलब हुआ इसका एग्जांपल देखो, ये मैं कमेंट में डाल देता हूँ ताकि एग्जीक्यूट करने में भी आसानी रहे. बेटा मैं जितने भी अच्छे से हो सकता है उतना पढ़ा रहा हूँ. लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट इन अ लिस्ट is nested list. Now we are having here a is equals to square bracket. Suppose we are having 4, 9, and then here I am having a square bracket 3, 4, 5. Square bracket 1. Then we are having 12, 13. Now the index number starts with. Are you just be with me? This is the index number 0. This is index number 1, and this whole is index number 2. This whole is this is index number 3 and this is index number 4. एक लिस्ट में एक से ज्यादा नेस्टेड हो सकते हैं, but I am taking only one. Once I print this, I will get the same format. अब इसका क्या यूज है मैं समझाता हूँ. List in a list. Just see here 4, 9, 3, 4, 5. This is index number 0. This is index number 1. And this whole is index number 2, and this whole is index number 3. Now pay attention, this is a list, so this in this nested, this is again I repeat 0, 1, 2, but in 2 it is 0, 1, 2. I repeat, in index number 2 the main list, ये जो list है ध्यान रखो ये main list है, और इसके अंदर जो list है this one is a nested list. This is the main list. This is the main, and this is the list defined here is nested list. So this is start with 0, 1, 2.
This whole is 2, but in 2, 0, 1, 2. Understood or not? समझ में आया? प्लीज शो थम्स अप. सो यहाँ पे जो मतलब को समझो. अब मुझे प्रिंट करना है. प्रिंट, शाबाश. मुझे एक ही थम्स अप दिखता है, इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन होता है. केविन अंडरस्टूड. Noel is not giving response. Parth is not giving response. Samriddhi, give response. Okay. So if you give response, मेरे लिए पढ़ाने में मजा आएगा. सीधी सी बात. शाबाश. So what I am writing here? Print A0. Obviously, it is going to print 4. But once I write it here, print A, 2 and 0. ध्यान देना इस बात पे. जब मैं 2, 0 यहाँ पर, once I write it here, 2, 0. So what happens here? It will display the result of the second index having value 0, having the value 3 at index number 0. So running it and you will get the result. Now see here, 4 is come because this is index number 0, main list. But within the list it is 2 and it is of 0. Now if I write it here, print A of 2 and 2, suppose. So confused मत होना. 2 is the main list and 2 is the nested list. The index of 2 is first index number 2 is of main list. और जो उसके अंदर है that is nested, उसका index number 2 बाद में. So result will come as 5. See, now show your concern. आपको समझ में आ गया तो concept show करना, otherwise मैं फिर से explain. I will explain it. Shabash. Nice to see. Understood. Shabash बेटा. Good. So ये बात समझ में आ रही है सबको? Okay. Now we'll come to the next point. Because मैं syllabus छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए syllabus एक नजर मार. Okay. ये बार एक ही चीज को देखिए. अब एक फंक्शन को लिखिए. अभी तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया है कि आपको लिस्ट में वैल्यू कैसे इनपुट करनी है. इसके दो तरीके सिखाऊंगा. दूसरा वाला तरीका मोर एप्रोप्रिएट है. पहला वाला तरीका इजी है. दूसरा वाला थोड़ा सा प्रोग्रामिंग ज्यादा है, बट दैट इज मोर एप्रोप्रिएट टू एंटर वैल्यूज इन अ लिस्ट. ये याद रखना. ठीक है. पहला वाला जो है मेथड मैं आपको सिखाने जो जा रहा हूँ, सिंपल है और यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं, आप सिलेबस में भी. एंड सेकेंड वाला मोर एप्रोप्रिएट है, थोड़ी प्रोग्रामिंग ज्यादा है. सो पहला वाला एंटर करने के लिए लिस्ट को अभी आपने एंटर नहीं किया, सिर्फ असाइन किया है. नाउ हाउ टू एंटर? So for that you write a function eval. This is the function name, eval. Write definition. The eval function of Python can be used to evaluate and return the eval function of Python can be used to evaluate and return the result of an expression okay, expression of an expression. ठीक है. Now एक पॉइंट इसमें लिखेंगे नोट करके, eval may cause or enforce problems in programming. So its use can be minimized. इन्होंने तो लिखा है discouraged. So its use can be discouraged.
Now what is the utility here? You just see here. अब मैं जो करने जा रहा हूँ इनपुट करूंगा. So A is equals to eval, and simply I will write. Normally we input input statement we use for the string. So input enter, उसके आगे eval लगा दिया. So उसको evaluate करेगा. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना. आप जिस तरह की वैल्यू भी देंगे ये उसी टाइप की वैल्यू इवेल्युएट. मींस if you are giving a list value, it will evaluate it as list. If you are giving a string value, it will evaluate it as string. It will give you the value as tuple. It will evaluate it as tuple. So abhi tuple I am not teaching you, but like I am teaching you input is eval. That is I am teaching you list concept. So eval will convert the value which you will given in the form of list as list. आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जो वैल्यू देंगे एज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, उसको वो लिस्ट की तरह कन्वर्ट करेगा. कोई भी एक्सप्रेशन को ये इवेल्युएट करता है और रिटर्न करता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन. किस फॉर्म में? जो फॉर्म आप चाहते हैं, मगर वो चाहने के लिए आपको उसी टाइप की वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. इनपुट एंटर वैल्यूज इन अ लिस्ट फॉर्म. ये मैंने जानबूझ के लिखा है कि लिस्ट फॉर्म में ही वैल्यू इनपुट करनी है. ओके, and then I will write it here, print it. So आपको realize होगी. Run. Before that we were just assigning. Now we are going to enter values. देखो इससे पहले सब assign हो रहा है. अब enter करेंगे. इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि पूरा फिर से आए. It will ask you to input values. So we are going to enter values here, and we are entering here 4, 5, 6, 7, 12, 45, 88, कुछ भी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट. Now what happens, as we have given the values in square bracket, it is considered as a list. Understood? Eval इसको evaluate क्या करेगा और return क्या करेगा? As list. Try to understand. Are you getting my point? But अगर यही मैं यहाँ पर square bracket हटा के round bracket लगा दूंगा तो ये एक आगे का concept है which I'll teach you. It will consider this as tuple. वैल्यू के हिसाब से उसके रिजल्ट इवेल्युएट होता है जो आपने एंटर किया है. तो आपने एंटर लिस्ट फॉर्मेट में ही किया है तो लिस्ट की इसको इवेल्युएट लिस्ट फॉर्मेट में कर देगा. एंड सो रिजल्ट हैज कम एज 4, 5, 6, 7, 12, 45 and 88. प्लीज शो थम्स अप सो दैट आई विल कम टू नो दैट eval आपको समझ में आया या नहीं आया. आपको अभी तक मैंने जस्ट आई हैव टॉट यू about the initialization. Now I am teaching you how to input, but simple input से नहीं होगा. ये int float वाला नहीं है. We are using a new function that is eval. So जिस टाइप की वैल्यू आप एंटर करेंगे उसी टाइप की वैल्यू को इवेल्युएट कर देगा और उस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देगा. लिस्ट टाइप की वैल्यूज को जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया तो लिस्ट है. अगर राउंड ब्रैकेट कर देंगे जैसे मैंने कहा टपल हो जाएगा. अगर डबल कोट्स में कर देंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी. तो ये जिस टाइप की वैल्यू है उसी के हिसाब से. Understood? Okay. So meaning after that is the same. Now I am going to display the list values in different format. आपका टाइम हो चुका है. टाइम पता ही नहीं चलता है. When I teach 30 मिनट्स कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चलता. फिर भी मैं 5 मिनट और पढ़ा दूं. For I in range. ठीक है. And what I am writing here, try to get this logic also. Print and run it. Now see the effect of this program. Invalid syntax execution. Okay, so that means it will not accept that. Okay, print a was list. Okay, no problem. Range हटा दो. For I in square bracket. बस. So what happens? देखो print a किया था तो ये पूरी वैल्यू एक साथ आई थी. This whole value is displayed here. But once we are writing for I in a, it is displaying 4, 5, 6, 712 and 50. Understood or not? एक तरीका ये है सिंपल वाला. आपको मैं डिफरेंट वेज बता रहा हूँ. Try to get. एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको. बहुत सिंपल सा. ये लास्ट है. इसके बाद मैं क्लास और मैंने जो पहले बताया था for I in
रेंज 0, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कहां तक डिस्प्ले करना है, क्योंकि आप एंटर कर रहे हैं। इसके लिए एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लेंथ l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a, और यहां पे मैंने ना लिखा 0, l कोलन प्रिंट a ऑफ i। तो पहले इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर, लेंथ क्या होगी, मतलब आपने अगर 5 एलिमेंट्स दिए तो लेंथ इज 5, 0, 1, 2, 3 and 4 इज डिस्प्लेड। अंडरस्टूड? सो इसको अब रन करेंगे, दोनों का मतलब आपको समझ जाओ। एक सिंपल तरीका है प्रिंट करने का। मैंने यहाँ पे वैल्यू, आई हैव एंटर्ड द वैल्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट 4, 5, 6, Mm-hmm. 33, ओके, एंटर। देखिए ये 4, 5, 6, 88, 44 कैसे आया, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जो मैंने प्रिंट किया था। फिर ये 4, 5, 6, 88, 44, 33 कैसे आया, दिस लूप, ये वाले लूप के कारण। फिर उसके बाद फिर से 4, 5, 6, 88, 44, 33 किससे आया, इस प्रोग्राम। तो आप एक ही प्रोग्राम को देखिए, मैंने अलग अलग तरीके से बना के आपको शो किया है। आप प्लीज इसको नोट करिएगा, समझिएगा, अलग अलग तरीकों से प्रोग्राम को समझो, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग द लॉजिक। आई थिंक दिस मच पॉइंट इज क्लियर टू यू। निश्चल, हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज बेसिकली A0, A1, और इसमें मैंने इंडेक्स नहीं दिया है, मैंने सीधे लिखा I in A। तो I in A का मतलब पहले इंडेक्स से ही स्टार्ट करेगा। Good. So that's all today. We'll meet in the next class tomorrow, and I will teach you some more programming in list. And again, I'm telling you, list is very important concept, and you have to go through list thoroughly. Learn the concept, learn the basic concept. Then only you will able to write programs in list. Take care. Bye. We'll meet in the next class.